Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 27th lecture of the series of CPC and we are continuing with the section 10 res subjudice. Now in this lecture we would start with a question, that is problem, and also try to solve that. तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप उसके फैक्ट्स को बार बार पढ़ो और यू हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग द केस लॉज. जितने केसेस के आप फैक्ट्स पढ़ोगे the more you will be better in solving the problems. So the question is, case of the plaintiff is that he is the owner in possession of the suit property called Black Acre and he acquired the same by perpetual sublease deed. A perpetual sublease deed mean ownership by perpetual sublease deed in 1981. अब इसको प्रॉब्लम को आपने पढ़ा इधर तक तो आपको कहीं पे आपको ये पेपर वगैरह पे कहीं पे लिखना पड़ेगा. मान लो एक प्रॉपर्टी बना ली. So upon this property is claiming ownership through perpetual sublease deed. अब here A is whom? A is plaintiff. ठीक, तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसको दोबारा पढ़ो. शुरुआत के जो 3-4 सेंटेंस हैं उनको बार बार पढ़ो जिससे आपको केस का शुरुआत आपको पकड़ में आएगा. और किसी भी केस का अगर शुरुआत पकड़ में आ जाता है तो फिर केस समझना आसान हो जाएगा. Broadly, the case of the plaintiff is that he is the owner in possession of the suit property called Black Acre and he acquired the same by perpetual sublease deed in 1981. Now, he claims to have raised a construction of said plot and allowed construction of the said plot and allowed the defendant through his youngest brother and his sister to reside on the ground floor of the said property. तो उसका ये कहना है कि मैंने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन किया था और कंस्ट्रक्शन करके मैंने ये मकान बनाया 2 स्टोरी हाउस और उसके ग्राउंड फ्लोर पर मैंने अपने ब्रदर और सिस्टर को रहने दिया. ठीक, तो ही सेड दैट आई एम द ओनर प्लस आई एम द possessor of the property. And then he says it is the plaintiff's case that the defendant later refuses to vacate the property. अब डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे? भाई बहन. अब ये कहता है कि जब मैंने उनको मकान खाली करने के लिए बोला then they refused to vacate the property and also filed a suit of partition currently pending in the Honorable High Court of Delhi with respect to the suit property. What he says is that these two people wrongfully refused to vacate the property and in fact they went on to file a suit for partition where in High Court against him. अब देखो दो सूट्स हैं, एक तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और एक अभी सूट किया है, एक सूट किया है ए ने बी के खिलाफ. ठीक, और अभी जो सूट किया है उसमें he is claiming that they should evict the premises because they are in illegal possession, illegally occupying the premises. अब फर्स्ट फ्लोर पे तो उसका खुद का पोजेशन है लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने एंड ही वांट्स टू वैकेट देम. और उधर पहले से एक सूट है ए के खिलाफ जिसमें उन्होंने पार्टीशन क्लेम कर रखा है. Now in these circumstances the plaintiff has filed the present suit seeking mandatory injunction in the form of directions to the defendant to vacate the ground floor portion of the suit property currently under them and also recover the arrears of rent. अब सूट उसने किसके खिलाफ किया है? भाई के खिलाफ, सिस्टर के खिलाफ नहीं किया है. अब देखो ए पर्सन है, उसकी ब्रदर एक है बी और सिस्टर है एस. So B and S, B plus S, having filed a suit against A in the High Court, and that is for partition. अब they are claiming what? A joint ownership. They are claiming a joint ownership with A, and they are saying that उनको right to partition है.
अब here the A has filed a suit against B regarding the same property, and that is for mandatory injunction कि उसको बोलो कि मकान खाली करने के लिए। अब इसमें एस को पार्टी नहीं बनाया, तो एस को इसने पार्टी नहीं बनाया, तो इसमें डायग्रामेटिकली आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैंने तो बनाया नहीं है डायग्राम, बट यू हैव टू ट्राई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे डीजेएस में और हरियाणा में, सो यू हैव टू मेक डायग्राम्स ऑन दैट। और इसके प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है कि जो केस लॉज हैं आप उनको टेक आउट द केस लॉज एंड उसको प्रैक्टिस करो डायग्रामेटिकली। तो शुरुआत में तो आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको बयान बनाने की। बट यू ऑलवेज कीप ट्राई टू मेक डायग्राम्स इन रफ एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक, तो देन फर्दर दे आर सेइंग देन the defendant has upheld the very maintainability of the suit and he has filed an application under section 10 claiming that an account of pendency of previously instituted partition suit with respect to the same property, this suit ought to be stayed in compliance with the mandate of section 10. So defendant का कहना है कि res subjudice लगेगा क्योंकि हमने पहले से partition suit फाइल कर रखा है। अब in response to the said application, the plaintiff has claimed that the matter in issue in the present case is completely different from the partition suit. The cause of action and relief claimed is totally distinct. So he also claims that the cause of action plus the relief are different. The cause of action and the relief are different. Then he has further argued since one of the sister of the parties is the party before the High Court but not a party in present suit, so suit is not between the same parties. So ये basically claim कर रहा है that the sister S is not a party to the present suit and therefore the suit is not between the same parties. Then the plaintiff has also argued that the partition suit before High Court is for the entire property, but in the present suit pertains only to the ground floor of the said property and subject matter is also different. ठीक, तो आपके पास 4 कंटेंशंस हैं जो प्लेंटिफ ने रेज किए हैं। तो 4 कंटेंशन प्लेंटिफ ने रेज किए हैं। दैट फर्स्ट डिफेंडेंट हैज, अब देखो डिफेंडेंट ने सिंपली रेज कर दिया प्ली ऑफ रेस सबजुडिस और उसके लिए ही हैज टू सिंपली शो दैट देयर इज अ सूट पेंडिंग बिटवीन देम एंड दिस इज अ फ्रेश सूट। अब उसको रिवर्ट करने का बर्डन होगा प्लेंटिफ के ऊपर। सो इन दिस प्लेंटिफ इन हिज रिवर्टल प्रेजेंटेड 4 आर्गुमेंट्स। अब आपसे सवाल है, डिसाइड द एप्लीकेशन ब्रीफली डिस्कसिंग द डोमेन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के बेसिस पर आपको बताना है whether res sub judice will apply or not, and if it apply why। अब देखो इसमें आप 4 कंटेंशंस को देखो। अब इसमें मैटर इन इशू इज डिफरेंट। मैटर इन इशू कैसे डिफरेंट है? उसका कंटेंशन है मैटर इन इशू इज डिफरेंट। बताइए मैटर इन इशू कैसे डिफरेंट है? अब देखो इसमें जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें भी वो ओनरशिप क्लेम कर रहा है। ओनरशिप के बेसिस पर वो कह रहा है कि मुझे मैंडेटरी इंजंक्शन चाहिए, इसको बाहर निकालो। आई एम द ओनर एंड ही इज नॉट द ओनर। ठीक, और बी का कंटेंशन है, अब ऑब्वियसली लिखा नहीं है इसने लेकिन पार्टीशन सूट तो डाल रखा है अभी ने। तो बी का कंटेंशन है कि वी आर जॉइंट ओनर्स। अब वेदर ए इज द सोल ओनर और ए और बी आर द जॉइंट ओनर्स, दैट इशू इज देयर इन दिस केस ऑल्सो। और पार्टीशन सूट में तो डायरेक्टली वही इशू है, वेदर दे आर जॉइंट ओनर्स और दे आर सेपरेट ओनर्स। ए इज अ सेपरेट ओनर। तो मैटर इन इशू सब्सटेंशियली तो सेम ही होंगे। तो मैटर इन इशू सब्सटेंशियली तो सेम होंगे। मैटर इन इशू दोनों में सेम है, जॉइंट ओनरशिप और सोल ओनरशिप। सो सब्सटेंशियली द मैटर इन इशू इज द सेम। तो ये जो कंटेंशन है ए का कि मैटर इन इशू डिफरेंट है, दैट इज रॉन्ग कंटेंशन। सो मैटर इन इशू एज टू वेदर यू आर जॉइंट ओनर or whether you are single owner, that is there in both the suits।
एंड देन कॉज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ। अब कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ का रेस सब्जुडिस पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक। कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ का रेस सब्जुडिस पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मैटर इन इशू सेम है। मैटर इन इशू सेम है, एक में रिलीफ मांगा पार्टीशन का और एक में रिलीफ मांगा मैंडेटरी इंजंक्शन का। दैट हार्डली मैटर्स, द मैटर इन इशू इज सेम। अब रिलीफ डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर इन इशू इज द सेम, रिलीफ डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक कंटेंशन है एस इज नॉट द पार्टी। नो डाउट्स एस इज नॉट द पार्टी इन द सब्सिक्वेंट सूट, but the actual occupancy of the premises is with B. So S is also involved in that. अब he has filed a suit only against B, जबकि पहले वाले में B and S together filed suit against A. अब substantially the parties are same or not. अब एक पार्टी अगर हट भी जाए, रेस जुडिकाटम में पढ़ा चुका हूँ, एक पार्टी अगर हट भी जाए लेकिन substantially the conflict of interest is the same between the existing parties, so res sub judice will apply. And then the other contention is subject matter different. अब subject matter different कैसे हैं? अब देखो partition suit is more comprehensive suit, जिसमें कि पूरा subject matter involved है, जबकि दूसरे वाले में उसी subject matter का एक part involved है। तो subject matter तो same ही हुआ, जो main subject matter है उसी का एक part इस suit में है। So broadly the subject matter is same. Partition suit is the more comprehensive suit, and that will decide the rights more better and in a more comprehensive manner, and therefore in this case res sub judice will apply. Therefore in this case res sub judice should apply, ठीक। क्योंकि देखो मान लो आपने पूरे जमीन का पार्टीशन सूट डाला, अब उसी जमीन का एक टुकड़ा है जिसका आप कह रहे हो कि इसका पोजेशन चाहिए, मैंडेटरी इंजंक्शन चाहिए, तो टाइटल तो सेम है दोनों में। अब आप पूरे जमीन का टाइटल डिसाइड करवा लो या उसके टुकड़े का करवा लो, द सब्जेक्ट मैटर इज सेम, मैटर इन इशू इज द सेम, द पार्टीज आर सब्सटेंशियली द सेम, एंड देयरफॉर रेस सब जुडिस विल अप्लाई इन दिस केस, ठीक। अब इसका आंसर आप लिखिए। राइट, इन दिस सेक्शन 10 is clearly attracted. In the above problem, the section 10 is clearly attracted and the suit deserved to be stayed. The matter in issue in both the suits in the legal capacity. The matter is in issue in both the suits in the legal capacity, that is the title of the parties vis-a-vis suit premises. In the partition suit, the present defendant has sought partition of the suit property, claiming to be co-owner of the suit property, which is being listed by the present plaintiff, who claims to be absolute owner by virtue of the perpetual lease deed executed in 1981 in his favor. Hence, there is a variance on this aspect. The title of the parties or legal capacity in which property is held becomes matter directly and substantially in issue. In which property is held becomes a matter directly and substantially in issue. In the present case, the plaintiff claims defendant to be a mere licensee in a overstage their license period. तो यही कह रहा है, वो यही कह रहा है कि मैंने उसको रहने के लिए दिया था, वो खाली नहीं कर रहा है। So the plaintiff claims defendant to be mere licensees in a overstage their license period, and he proves to get the suit property vacated from the defendant claiming to be owner of the land of the very document. कौन सा document? Lease deed. He proves to get the suit property vacated from the defendant claiming. He proves to get the suit property vacated from the defendants claiming to be owner of the land of the very document lease deed of the very document which is directly and substantially in issue in the partition suit. अब कौन सा document? Lease deed. तो plaintiff lease deed के basis पे कह रहा है that I am the owner, और partition suit में वही document challenged है
because the other party is claiming that they are co-owners. In the partition suit, the title and the legal capacity of the party is therefore the matter in issue in both the proceedings. The contention that another sister is the party to the partition suit but not before the present court is of no consequence, since the requirement of section 10 since the requirements of section 10 is that party should be common in both the suits. Complete identities of all the parties is not a requirement of section 10, though also relief in the present case concerned the sole defendant, which is plaintiff in the other case. Furthermore, the contention that the present suit concerned the portion of the suit property, whereas partition suit concerned the whole suit property, is also devoid of merit, as the subject matter in essence in both the cases is the same. तो subject matter तो same ही है, एक में ज़्यादा है, एक में थोड़ा उसका part है. So the fact that the previously instituted partition suit is more comprehensive suit goes on to support the stay of the present suit and not to the contrary. So the fact that the previously instituted suit is a more comprehensive suit goes on to support the fact that the present suit shall be stayed. Now next paragraph, that there is nothing which says that in order for the doctrine of res subjudice as engrafted in section 10 CPC to apply, the test is that if the previous suit is decided, whether the decision therein would constitute the res judicata on the subsequent suit. If yes, the subsequently instituted suit deserved to be stayed. In the present case, the decision on the partition suit would consequently establish the right and title of the parties vis-a-vis the suit property, and as such would bind the present court. For example, if the present defendants held to be co-owner in that suit, making them entitled to partition, the present suit will automatically become barred by res judicata, and the finding of such title of the partition will bind the present court. So what they are saying कि अगर पहले वाला suit decide हो जाए तो present suit पे res judicata लग जाएगा. Now the court in such a situation cannot reach a different findings and pronounce the defendant to be licensees. तो अगर फॉर्मर सूट में अगर उनको को ओनर डिक्लेयर कर दिया तो प्रेजेंट कोर्ट में आप उसको लाइसेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द रेस जुडिकाटा विल अप्लाई. सो इन दीज सर्कमस्टेंसेस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट इज अलाउड. ठीक, तो इधर तक आपको लिखना है. इसके बाद तो कोर्ट का लैंग्वेज है. द सूट इज एडजर्न्ड फॉर द अनलिमिटेड टाइम, फाइल इज कंसाइन्ड टू रिकॉर्ड रूम. ये तो कोर्ट का लैंग्वेज है, ये आपको नहीं लिखना है इतना. इसके बाद तो मतलब सूट को द सूट इज एडजर्न्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम, जब तक आगे कोई प्रोसीडिंग ना हो. फाइल बी कंसाइन्ड टू रिकॉर्ड रूम विद द लिबर्टी टू पार्टीज टू रिवाइव द सेम ऑन अ डिसीजन ऑफ अ अर्लियर सूट फॉर फर्दर प्रोसीडिंग. सो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द जजमेंट ऑफ ए जज. दैट पार्ट वुड बी eliminated in your answer writing. Okay, file be consigned to record room etc. तो इस आंसर राइटिंग से दो तीन चीज़ें हैं बताने के लिए. एक तो लैंग्वेज की मैच्योरिटी जो आपको समय के साथ पढ़कर जजमेंट्स आएगी. दूसरा एक इसमें एक लॉजिकल फ्लो था, कंप्लीट लॉजिकल फ्लो, क्योंकि इसमें 4 कंटेंशंस हैं और हर कंटेंशन में इसमें माइंड अप्लाई हुआ अपने, और हर कंटेंशन को अलग पैराफ्रेज किया है. तो इसमें कोई लिस्ट नहीं बनाया है कि आई विल डिस्कस 4 कंटेंशन.
So in this, the simply one by one contentions are picked up and applied the judicial mind. और लास्ट में इसमें रेस जुडिकाटा का जो टेस्ट दिया है, लास्ट में रेस जुडिकाटा का टेस्ट दिया है जिस पे भी, जो कि इसमें रेज नहीं है, लेकिन रेस जुडिकाटा के बेसिस पर ही कम टू कंक्लूजन, ही फाइनली कंक्लूडेड दैट रेस सबजुडिस विल अप्लाई। ठीक, इज दैट फाइन? तो अगर पहले वाले सूट में टाइटल वगैरह अगर सेम है, वो डिसाइड हो जाता, तो सेकंड वाले सूट पर रेस जुडिकाटा लग जाता, तो इसीलिए इस पर रेस सबजुडिस लगेगा। Is that fine? So this is over with the res subjudice. Now next we have to move into order 2 rule 2, plus we have to compare order 2 rule 2 with the res judicata. But for that, first we have to read the section 12. So we would get started these topics in the next lecture. That's it for this lecture. Thank you for watching lecture.